Welcome back, everybody, to Waadaplaya Concussion Sub Series. Centurion is breached. We started the year with GABA, then we went to Lords, then we went to Oval, and then ending the year on a super high note. First ever victory by an Asian team in Centurion. Team India is only continuing to propel. This probably is the best ever fast bowling attack. So, talk about this day five where India wrapped up the test match and went one up. Mayur back on the show, and then Sanjay Dubey from London makes a guest appearance. Hi, Subin. Hey, hey, hey. So, how did So, you man, guys like the 2021 test year for Team India? Starting with Mayur. I mean, everything went perfect except the World Test Championship final, I would say. That even there too, it was the weather which played a bit of spoil sport. I think those few crucial sessions. But apart from that one World Test Championship final, I think they've done everything. Even now, as per the new Test Championship, India is on top of the table. So yeah, the Test cricket is in good hands with the Indian team, and with Dravid coming in, I'm hoping already that the next time the championship is with India. Hmm. And Sanjay, I was looking at some stats. They were saying that over the course of last 30 years of Test cricket history, India has never been in a better position when it comes to an overseas win. I mean, we are all born and raised during 90s. We have seen the pain. So how happy are you seeing a South Africa win at Centurion? अगर वो रिकॉर्ड नहीं भी मेरे सामने आता तो मैं बता देता कि दिस ईयर इज इजीली द बेस्ट वीव हैड ओवरसीज और जो ब्रिस्बेन से स्टार्ट हुआ लॉर्ड्स और फिर ओवल दोनों जो आई वाज लकी इनफ टू वॉच द फिफ्थ डे अगेन और आज भी फिफ्थ डे जो आई मीन इट्स अनबिलीवेबल यू कैन टॉक अबाउट विराट कोहलीज कैप्टनसी इन आईसीसी चैंपियंस कुछ जीता नहीं है उन्होंने बट ही इज बाय फार आई थिंक द बेस्ट टेस्ट कैप्टन वी हैड इन द 21st century. So this is the best year. Really enjoyed it. बहुत ही बढ़िया preparation था. And ये journey, Mayur, as you would imagine, started in 2018 back in South Africa. And again, Ravi Shastri, I think last night mentioned to one of the interviews that he told the selectors that instead of making Bumrah and home debut, let's unleash him in South Africa in his own style. Yeah, Let's yeah, unleash him yeah. in South Africa. So a lot of hard work and a lot of credit to Ravi Shastri as well, Mayur. Yeah, I mean, another good factor about this team is that if you see in all the key victory, one of the other stars is missing, but still they managed to bounce back. There was no Rohit Sharma now, there was no Kohli when they went in Gaba. In England, they didn't had a full sprint squad, but still the character of the team is such that it reminds me of the Aussies in the 90s, where you have some tailender coming in and playing a match-winning knock like Shardul Thakur did in Gaba. You have bowlers hunting in packs, which is very rare for an Indian bowling lineup. I mean, as you said, that when we grew up watching, until the result was there, we didn't know India will win. But yesterday, we all were pretty confident that second session max, they will be wrapped up. And it so happened. So it's good. I mean, all credit to the bowlers because I was just thinking that as a batsman, you can bat once and still win a game, but bowlers, you have to bowl twice no matter what the score is. As batsmen, at least, okay, you put 600 runs on the board, your job is done. But bowlers taking 20 wickets, that too in this era where the batsman knows everything what's coming next. They know the bowlers in and out with all the analysis, but still to play those mind games, setting up batsmen in overseas condition. I mean, yes, we have a good coaching staff compared to 10 years back, but to put in those hard yards in the on the pitch when it comes to match practice, the way they go about things. I mean, this is by far, I know we still have a lot of bench strength, but these three bowlers in particular, Shami, Bumrah, and Siraj, also the way they hunt together relentlessly, it's marvelous to watch. I mean, yeah, too good. And संजय आपका क्या ख्याल है ये bowling का difference है 90s India versus 2000s का India या batting या team effort? What is one factor you attribute to this transformation? I think it's fast bowling because you don't even have to
गो बैक टू द 90s। अगर आप धोनी के ईरा में देखें तो हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो 90s से कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम लोग लगातार 4-0 हारते थे, रेयरली कोई एक अवे विक्ट्री आपको याद होगा अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडीज। तो आई थिंक क्लियरली या तो ये विराट कोहली ने किया है कि द एम्फेसिस की फास्ट बॉलिंग चाहिए और जो तेज डालने वाले हों गेंदबाज वो चाहिए। ये हमको 60-70-80 माइल्स वाले नहीं चाहिए। तो आपने देखा होगा कि एक एक दौर था जब स्लो मीडियम पेस वाले काफी आते थे। तो लास्ट 4-5 साल में और आप बेंच स्ट्रेंथ भी देखिए कि दुनिया भर के 90 माइल्स डालने वाले फास्ट बॉलिंग है और बहुत अच्छी लाइन लेंथ ये लोग डालते हैं कंसिस्टेंटली, जो बहुत ही अनरियल है। जैसे 90s में तो हम लोग देखते थे एक बेचारे श्रीनाथ थे, वो अपना 8-9 ओवर कैसे डालते थे, प्रसाद भाई हमारे थे, और बाकी जो थर्ड सीमर होता था वो रैंडमली आते जाता था। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम हैविंग दीज फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज, दैट कॉल कि हम लोग 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे इवन इन कंडीशंस जैसे इस मैच में। सबको पता था कि ये बॉलर फ्रेंडली है और बहुत लोग यही चाहेंगे कि 7 बैटिंग ऑप्शन के साथ जाए, बट वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना और वो रिस्क लेना। इमेजिन ये राहुल का 100 ना हो और इंडिया 150 पे ऑल आउट हो जाए तो सब हम लोग भी यही कहें कि अरे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ही खिला लेते, वैसे भी अश्विन ने क्या बॉलिंग कर लिया। तो टेक दैट रिस्क और फिर टीम उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, आई थिंक दैट्स ह्यूज अचीवमेंट। तो एक 5 बॉलिंग स्ट्रैटेजी और पेस बॉलिंग हमारी जो बेहतर होती गई, और आई थिंक फिटनेस वगैरह इससे भी हेल्प होता है। तो 90 से तो कोई कंपैरिजन नहीं, बट विद इन दिस लास्ट 10-15 years there's a big transformation. एंड कोइंसिडेंटली आपने जावेद श्रीनाथ का I रेफरेंस mean, दिया, उन्होंने एक्सप्रेस स्पोर्ट्स को एक रिसेंट में आज सुबह सेंचुरियन के बाद बताया गया कि बुमराह probably is in swing, out swing, fast bowling. He probably rates him as the best India fast bowler ever produced, which is a big statement coming from Javed Srinath, who's played ridiculous amount of overseas cricket. And then talking about Bumrah, Mayur, how good is Bumrah? Yesterday, if you look at the 2 wickets, which is Van Dursen, he set him up nicely, and Bumrah is becoming this master architect, right? There was a outside the off stump ball for Van Dursen, which was going straight up, and he left the ball. And then 2-3 balls later, the same line and length, and the ball came in, and Van Dursen left it, and it straight castled into stumps. So Bumrah is just not coming and bowling fast. He's thinking bowler, and is that helping the Team India cause? What are your thoughts there? I mean, definitely. The best thing about Bumrah is his simple approach to the game. He gets hit for a four, he smiles. Anyone drops a catch, he smiles. He just goes back to the bowling mark, comes back. And I mean, you just go to watch any of his interviews. Probably he thinks as much as the captain about the game because he's a very thinking bowler. He tells the captain, "This is the field I want." And with Bumrah, I mean, the mystery factor, of course, is a short run up because the action comes out of his hand so quickly. The batsman, plus it's an action where the hand is not coming straight, but it's coming from a side on action, and you can't predict which is the seam, which side it is. Someone like a Glenn McGrath or a Mitchell Stark, they hold it upright, or a Shami. But with Bumrah, like he probably cut short yards between different overs. So his run up changes between 5 different overs. He might have 2 run-ups. So that's the mystery. He understands that it's not about just the bowler just getting everything off the pitch, but he sets them up well. And yeah, I mean, he's one of a kind bowler for the, and not only in Indian team. I would say in this decade of cricket at least, it's very hard to get a bowler with such a short run up and getting so much of the pitch. Yeah. एंड संजय, मेरे ख्याल में हम केएल राहुल के बारे में बात करेंगे, बट मेरे ख्याल में प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए मोहम्मद शमी, बिकॉज फर्स्ट Agreed. इनिंग्स में उनका 5 विकेट्स एंड सेकेंड इनिंग्स में उनका इकोनॉमी एंड फर्स्ट ब्रेक थ्रू. हाउ अंडररेटेड इज शमी, संजय? शमी He's underground. काफी काफी मतलब बहुत ही बढ़िया बॉलर है वो तो। आई थिंक फास्टेस्ट 200 विकेट भी उन्होंने लिए हैं, और जब से उन्होंने डेब्यू किया है आई थिंक उनकी फिटनेस जब से बढ़ी है, अच्छी हुई है। ही हैज हैड पर्सनल इश्यूज एंड ऑल दैट, उसको ओवरकम करके जो बेहतरीन गेंदबाजी वो करते हैं, इट्स अनरियल। आई थिंक इस मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बट आई स्टिल एग्री विद द मैन ऑफ द मैच
केएल राहुल, मुझे लगता है इट्स बाय फार, आई थिंक दिस I विल, I आप 5-10 just साल में deny, क्योंकि 2 साल से बोल रहे हैं कि अगर हमको टेस्ट मैच जीते हैं तो 20 विकेट लेनी पड़ेंगी, पर वो 20 विकेट ले कौन रहा है? तो नहीं और मैं, शमी का लेकिन मुझे अभी भी याद है, वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के साथ नबी को आउट किया जो अच्छे फॉर्म में थे, he took a hat trick but still he didn't get a man of the match. I mean, I think it's a commercial aspect of the game that the batsman gets, but hands down Shami deserved the man of the match, no doubt. You can't win a match without 20 wickets. इस गेम में आप सिर्फ एक राहुल का आप 100 हटा दीजिए, आप इंडिया 150 पे ऑल आउट जाता है, और आप 5 विकेट ले 10 विकेट ले, डजंट रियली मैटर। अगर आप 300 नहीं बनाते हैं, आप रन्स बोर्ड पे ना हो, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे इंग्लैंड की टीम थी, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन ही बनाए थे, 260, बिकॉज बैट्समैन रन ही नहीं बना पाए, तो बॉलर्स को दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ से 20 विकेट लेंगे? तो मेरे हिसाब से तो केएल राहुल फैंटास्टिक 100, ये जो 100 उन्हें बनाया, आई थिंक इज इट्स प्रोबब्ली हिज बेस्ट 100 कंपेयर्ड टू ऑफ ऑल द 2-3 हंड्रेड्स ही स्कोर्ड। और जो उनको लक एक फैक्टर होता है, ऑब्वियसली यू गेट अ चांस अहेड ऑफ गिल। केएल राहुल का कोई नंबर ही नहीं था इंग्लैंड में, उनको चांस मिला, उन्होंने Yeah. पूरा उसका फायदा उठाया। और बुमराह पे एक बात कहूंगा कि इसमें यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द मैनेजमेंट एज वेल, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। उन्होंने 100 ओवरसीज विकेट लिए हैं, और आई थिंक होम में कुछ 8 या 10 भी नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, तो जैसे उन्हें उनका वर्कलोड मैनेज किया, दैट्स अमेजिंग। और शमी से भी आगे लोग बुमराह को इसीलिए रेट करते हैं कि जब कुछ होता नहीं है पिच में, तब ही विल एंड अप गेटिंग अ विकेट। आपको एक वो याद होगा स्लो बॉल, जो बहुत रिप्ले आपने भी शॉन मार्श का था, जो Sean Marsh, just शॉन before मार्श का, lunch. कुछ हो नहीं रहा उसमें, स्लो बॉल डालना Yeah. अचानक, तो आई थिंक भले 5 विकेट ज्यादा ना ले बुमराह, बट जो क्रिटिकल मोमेंट्स में विकेट लेते हैं, आई थिंक दैट हेल्प्स द टीम। और लक और के एक बारे में, अगर लक के बारे में बात किया जाए, तो रोल मोदी का क्वेश्चन है, जो मुझे भी लगता है, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, is he the lucky charm which used to be Piyush Chawla, Srishant kind? Is केदार Thakur जाधव, for us? अगर ऐसा आई लगता है तो मीन उनको रख सकते हैं, बट आई मीन इसमें 5 बॉलर खिला रहे हैं, इसीलिए शार्दुल ठाकुर है। फोर्थ बॉलर अगर सिर्फ 4 खिलाते और 4 फास्ट बॉलर खिलाते तो इनका कोई जगह ही नहीं बनता। बट आपको इंग्लैंड में उनका 50 याद रखना होगा, और जो ब्रिस्बेन में खेला था उन्होंने, और वॉशिंगटन सुंदर ने, तो उसी वजह से वो टीम में है। बाकी नो बॉल पे थोड़ा कंट्रोल कर लें तो उनको बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से विकेट मिल ही जाती है, एक दो यहाँ वहाँ। तो आई थिंक इसी वजह से है वो टीम में, अगर उनकी बैटिंग ना होती तो उनका कोई चांस नहीं बनता टीम में। I मयूर, आपका think, क्या ख्याल है? I mean, another strong factor why India is doing so well is they have a different lineup when they bowling lineup when they play at home, and a different lineup when they go overseas. So if you see Umesh Yadav, Ishan Sharma are all home domestic match specialists, Jayant Yadav, but when we go overseas we have Jadeja, Ashwin. I think workload management has been critical, and as New Zealand does, I think India is going to that approach, having horses for courses. So it's helping the team, and definitely, I mean, yes, जैसे संजय ने कहा कि शार्दुल ठाकुर की लक है, but I would say लक भी मेहनत से आती है, ऐसे ही लक नहीं आ जाती है। तो he still played some really crucial knocks. I mean, he can take the attack to the bowlers. अब पंड्या में बहुत ज़्यादा talent है, but still he didn't show his mettle that much in, at least in Test cricket. ODI format, yes, definitely he's proved himself. But for Test cricket, we need all rounders. I think with another two good all rounders, this team has everything complete. We have bench strength in keepers and batsmen and bowlers. Where we lack bench strength is probably all rounders. So we have to develop youngsters like Shivam Dubey and other guys, so that once all rounders are completed, it's a team which to reckon to take on any opposition in any venue. एंड 2021 रेट्रोस्पेक्टिव में देखा गया तो पूर्वल मोदी जी काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आज कि इवन इफ आई थिंक ऑफ इट, are test matches becoming more result oriented now compared to the last decade? So I'm interested to hear both of your thoughts, Sanjay and Mayur, on this. आई थिंक पिचेस, मुझे लगता है कि एक तो पिचेस ज्यादा बॉलर फ्रेंडली हुई है, विच इज वेरी गुड। आई थिंक 90s में आप देखेंगे कितने सारे, 90s के पहले तो और भी बेकार था मेरे ख्याल से, 5 टेस्ट मैच होते थे, एक दो रिजल्ट आ गया तो भी लोग समझते अरे बहुत अच्छा हो गया। और आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लिमिटेड ओवर्स का जो
इफेक्ट है वो टेस्ट में आ गया है, उतना लोगों के पास पेशेंस नहीं है ना तो देखने का और ना खेलने का। तो आफ्टर अ पॉइंट यू सी, अगर 2-4 अच्छा ओवर्स हो जाए तो लोग शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं या फिर अपना विकेट गंवा देते हैं। तो मुझे लगता है काफी सारा कॉम्बिनेशन है। पिचेस बेहतर हुई है, बॉलिंग और ड्रॉप इन पिचेस कोई कोई बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली हो जाते हैं, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। बैटिंग क्वालिटी प्रॉब्ली थोड़ा गया है, खराब हुआ है, एंड पिचेस हैव बीन मोर बॉलर फ्रेंडली। श्रीलंका में एक दौर था जब 90s में जो जयसूर्या ने इतने रन मार दिए थे, इवन वेस्ट इंडीज में भी अर्ली 2000 में ड्रॉज काफी सारे होते थे, बट अब मेरे ख्याल से सब जगह अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, दैट्स गुड। मैं तो चाहता हूँ 2 दिन में भी मैच खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2-5 दिन का बेकार ड्रॉ देखने से अच्छा 2 दिन वाला मैच खत्म हो जाए, वही बेहतर है। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट बनाए रखने में बहुत अच्छा हुआ है कि हमको बहुत सारे अच्छे टेस्ट मैचेस और रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैचेस देखने को। मयूर, आपका क्या ख्याल है? Well, तो और मैं करूंगा जैसे T20 की वजह से, संजय ने कहा कि ओडीआई की वजह से, बट मैं ये मानता हूँ कि T20 की वजह बैट्समैन में बिलीव आया कि आखिरी दिन 300 रन चाहिए to chase it. Plus, the series are becoming shorter. If we no longer have 5-match series, you usually have bilateral series. There are 2 matches, so teams are going for the kill because if they win the first match, they believe that okay, we go for the kill, and if the first match is drawn, next match they want to go for a result. और कई सारे फैक्टर है जैसे कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है। अब टेस्ट क्रिकेट पलटने के लिए प्लेयर्स also know that you have to produce results and it's good for the game, क्योंकि देखा जाए तो जो आपके टेस्ट प्लेयर है वो डेवलप होके आपके प्लेयर बनते हैं। बहुत कम प्लेयर है जो T20 से टेस्ट मैच आते हैं, तो टेस्ट मैच खेलने से आपकी बेंच स्ट्रेंथ किसी भी टीम की बढ़ती है। It and yeah, that's the only way you can keep the game alive. सुमन, आप अपना बताइए ओपिनियन। मेरा आपको ओपिनियन क्या ये लगता है? है, I think the players are more motivated to drive for the result. That is a big factor. Yes, pitches have evolved. There are groundsmen doing a good job. I'm not taking any credit away, but if you look at the batters and bowlers, we've spoken about Bumrah. He's not just coming and bowling a quota of 20 overs and going away. He's looking for wickets. And the more and more bowlers are trying to do that, the result is getting driven. और अगर बैट्समैन का भी देखा गया, so opening combinations या bowling combinations or middle order Rishabh Pant's transformation of coming and playing as fast as he can. अगर वीरेंद्र सहवाग के टाइम देखा गया, गिलक्रिस्ट के टाइम देखा गया, यानी तो संगकारा या इनके टाइम पे देखा गया, पॉन्टिंग, ये लोग, they were result oriented. They wanted to push for result with the brand of cricket they play. So I feel that players have a big part to play. Yes, groundsmen and coaches and test pitchers are making progress, but I think players have a large part to play for driving the और result on test और एक match. इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है हम लोग ने मिस किया है कि डीआरएस का फैक्टर, बिकॉज डीआरएस की वजह से पहले Correct. जो जिमी एडम्स आपको याद होगा सब पैड कर लेते थे, आजकल कोई पैड से खेलता नहीं है, सब बैट से खेलने जाते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर थोड़ा भी 50-50 हो, अंपायर्स कॉल हो, सो देयर इज अ चांस दैट दे विल बी बोल्ड आउट और गिवन आउट। तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा वो भी एक फैक्टर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। Yeah, Absolutely, spot बिल्कुल। on, Sanjay. I और mean, go ahead, Mayur. yeah, आज अगर if we look at Elgar's wicket, if there was no DRS, it was definitely, as per the umpire, it would have been heading down leg side. But because of DRS, the gates opened. We got the crucial breakthrough, which got Dickok and Bumrah in. So yeah, rightly pointed out. DRS, even if in a match you're getting 5 successful reviews, those are 5 wickets, and that can cost you a game ideally. Yeah. और दो आखिरी टॉपिक्स बात करेंगे। पूर्वल मोदी जी काफी परसिस्टेंट है, एक चीज पे बात करने के लिए वो आएंगे लास्ट पार्ट, बिकॉज दैट इज गुड न्यूज के टाइम टेंशन नहीं लेने का मोदी। बट एक चीज इन्होंने पॉइंट किया क्या कि हाउ डू यू मोटिवेट साउथ अफ्रीका टीम। अगर देखा गया, दे हैड अ प्रीटी डिसेंट टेस्ट मैच, दे ऑलमोस्ट एंडेड अप ड्रॉइंग इट। विनिंग वुड हैव बीन आइसिंग ऑन द केक, बट even Elgar was telling in the post-match conference that they are really not happy with the result because I think they had plans. So, what do you think of this South Africa team and what should they do going into Test 2? आई थिंक मेरे हिसाब से
इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला. आई थिंक वो जो फर्स्ट 2-3 घंटे थे फर्स्ट डे के, आई थिंक अगर थोड़ी वो बॉलिंग बेहतर करते तो आई एम श्योर उस सिचुएशन में इफ वी वर द बॉलिंग साइड वी वुड नॉट गिव एज मच क्रेडिट टू द ओपनर्स. हम लोग ये सोचते यार हमारी बॉलिंग खराब थी इसीलिए लोग 100 रन की पार्टनरशिप बना लिया. आई थिंक दैट सेट अप द मैच ब्यूटीफुली फॉर इंडिया. और उसके बाद इन्होंने सेकंड डे से, इफ यू इग्नोर द फर्स्ट डे, सेकंड डे से तो पूरा इन्होंने बहुत अच्छा खेला है. आज भी उनकी बैटिंग कल भी ठीक ठाक ही थी. 200-250 ही ऑन पार स्कोर था, तो वहां 70-80 रन जो एक्स्ट्रा दे दिए वहां उनको प्रॉब्लम हो गया. और हम बात कर रहे थे हमारे प्रीव्यू में, सुमन इफ यू रिमेम्बर, मार्शल नहीं, मार्शल मैं नाम ही भूल रहा हूँ एक्चुअली. हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर केप टाउन से पहले इंडिया सीरीज में रहती है तो दे विल हैव अ ग्रेट चांस, बिकॉज सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग तो नेक्स्ट लेवल है. आई थिंक उसमें सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही विकेट ले रहे हैं. लास्ट 5 साल में कोई और विकेट ले ही नहीं पा रहा है. तो वहां बारिश हो 2 दिन तो भी मुझे लगता है मैच इजीली एक रिजल्ट आ जाएगा. तो साउथ अफ्रीका डजंट नीड मोटिवेशन. लास्ट ईयर इंग्लैंड चली गई थी रिटर्न, उनके लिए कमर्शियली और अदरवाइज भी बहुत बड़ी सीरीज है आफ्टर दैट गुड परफॉर्मेंस इन टी20 वर्ल्ड कप. तो मुझे लगता है उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. इंडिया हैज टू समहाउ विन द सेकंड टेस्ट और व्हाट नॉट. मतलब इससे अच्छा गोल्डन मौका हम नहीं मिलेगा हमको सीरीज जीतने का. तो आई एम लाइक होपिंग कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छी शुरुआत हो टेस्ट क्रिकेट में. Mayur, word on South Africa performance? I mean, they did well, but the next two test matches, I think it's simple for them. Get India 2-3 down in the first session, and the game is almost there because the middle order is shaky. Pujara, Rahane are playing with a mindset that will we be there in the next series. And as we discussed, there are no all rounders except there's no Washington Sundar, there's no Hardik Pandya, there's only Shardul Thakur and Rishabh Pant in the middle order who can give a fight. But imagine if India were 12 for 3, 15 for 3 in any of these innings. So yeah, Rahul played a key innings in both which gave them a cushion to play with. But I think next two matches, if India loses 3 wickets in the first 50 runs, I think it's again back to the old Indian setup that we have. If you see the last few victories overseas, have the key victories I'm saying have just come because the openers have played up their part, like Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Shubman Gill. They've literally taken the attack to the opposition. So when a middle order batsman comes in, he's much calmer, like Lakshman used to be when he used to play. So yeah, for South Africa to win, get the Indian openers back in the hut soon. I think again they are the favourites straight away because even to take 20 wickets, Indian bowlers need runs on the board. Yeah, and unfortunately, yesterday they lost way too many wickets for their liking last night. If they would have gone into day five with, say, 8 wickets in hand, it would have got into a close contest. But anyway, I'm happy that India won in Centurion, first Asian country. Now, one quick question, rapid fire for both of you. Will India make any changes to the playing 11 going into Test 2? Sanjay? Should India make change? I mean, now that they've gone ahead with Pujara, I think I'll just stick to him because कोई मतलब नहीं बनता है. सीरीज शुरू हो गई है, इंडिया जीत भी गई है, तो एक दो प्लेयर्स को कैरी कर भी सकती है. Will India make change? I don't think so. क्योंकि यहाँ हम लोग जीत गए हैं, तो अनलेस कोई इंजरी कंसर्न हो, मुझे लगता है सेम साइड के साथ जाएंगे. Mayur? I believe there will be a change because Dravid is now the captain. I mean, the coach. Shastri would be that kind of a coach who doesn't want to disturb the team when it's winning. But with Dravid, like in Sri Lanka, you saw, in spite of winning the series, he still made changes in spite of everyone questioning. I definitely feel Pujara or Rahane, one of them has to be swapped to give the youngsters a chance. I mean, Vihari ko lao. क्यों लेके गए हो फिर? Get Vihari in, make the middle order solid. And if there's a opening top order collapse, you have Vihari and Rishabh Pant to take care of the middle order rather than leave it to just the bowlers. I mean, Vihari has to be in. I don't doesn't matter Pujara or Rahane, whoever is left out. मुझे मुझे लगता है लगता है अगर उनको, आई एम सो सॉरी सुमन, मुझे लगता है अगर अगर द्रविड़ का इन्फ्लुएंस होता ये सीरीज के पहले होता, द फैक्ट दैट पुजारा हैज प्लेड द फर्स्ट गेम, आई कैन नॉट सी हिम गेटिंग ड्रॉप्ड आफ्टर इंडिया विनिंग. और रहाणे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. 48 बहुत ही क्रूशियल नॉक था. इवन दैट 20 रन्स which he scored, उसमें एक जो शॉट था एकदम याद रहने वाला शॉट था, वो भी आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस. बस या सुमन, मुझे लगता है एक चेंजेस
एक चीज तो जरूर होगा, शार्दुल ठाकुर will make way for an extra bowler or an extra batter. But Rahane and Pujara, unlikely they're going out of the team for at least another test match. That's my thought process, but we will see. Anyway, fantastic win. Centurion breached, signing off on a high note on 2021. Thoroughly enjoyed India's performance. Very confident going into next year that we will continue to make way. Sanjay, thanks for making time. Really appreciate it. Mayur, thanks for joining us Thank for you. day five. Enjoy the win and Thank you. go into New Year's with a high cricketing spirit. Folks who have engaged, Kurul Modi, thanks for watching. And folks who have been joining us, thanks for supporting us this year. And we'll see you on the other side. Thank you. Happy New Year, guys. See you Happy guys. New Year. Happy New Year. See you.